Welcome to my YouTube channel. So today we'll start from a Nifty because in Nifty basically if we see from last 10 days from July start, so हो रहा ऐसा था कि निफ्टी साइडवेज जा रहा था धीरे धीरे नीचे, बट स्टॉक्स वर गोइंग मोर डाउन. इफ यू सी द स्टॉक्स विच आई रिकमेंडेड, सो हो रहा वैसा था कि साइडवेज में भी स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादा गिर रहे थे. एंड दैट वाज द रीज़न दैट देयर वर टू थ्री स्टॉक्स जिसमें से स्मॉल प्रॉफिट लेके निकलना पड़ा, एंड देर आर टू स्टॉक्स जिसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया. सो दैट वाज द रीज़न. बट इफ़ वी सी टुडे, सो आज थोड़ा ऑपोजिट हो रहा है. दैट निफ्टी इज बिन डाउन फ्रॉम 0.28 एंड इट्स लाइव मार्केट. बट इफ वी सी स्मॉल कैप एंड मिड कैप, दे आर अप बाय 0.80 or something when I watch in afternoon. But let me see right now. या मिड कैप भी 0.68 अप है अभी भी, which shows the sign of strength, and the reason is 20 moving average. In the same, if we see the small cap, so small cap में भी वैसा ही है. Yeah, small cap is 1% up, and if we see the reason, so it's the same. So there are chances that we can see some strength in स्मॉल कैप एंड मिड कैप इफ अगर यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं होता है. एंड इफ वी सी अ ब्रेक डाउन, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट 18,000 तक स्टॉक्स आ सकता है. आई मीन 18,000 तक इंडेक्स आ सकता है, तो बाकी सब स्टॉक्स भी यू कैन एक्सपेक्ट दैट 5-7% का फॉल होगा. एंड नाउ लेट मी शो टू द स्टॉक्स विच आई बॉट एंड विच आई सोल्ड. सो द थिंग इज दैट basically stock was not the wrong, timing was wrong, and that's the reason we have to get out from the stock. Because if we see today max health, which turns into the upside again, it was nearly 3% up in the morning. But the thing is that I sold this stock on Friday, and the reason was that I was on the break even point, and देखा जाए तो ऐसा कुछ दिख रहा नहीं था कि मंडे को भी ये स्टॉक रेजिस्ट कर सकता है. सो मुझे ब्रेक इवन पे निकलना पड़ा. But if we see Indus, that is also the break even point, and if we see the HDFC and Fortis, तो जहाँ पे मुझे small profit 6-7% का बुक करना पड़ा. So these are the things. And if we see the persistent, the stock persistent and the Lloyd जिसमें मुझे लॉस बुक करना पड़ा, and the reason was the market condition. And according to market condition, persistent और Lloyd को support नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से आज भी Lloyd down है. I don't know what's the reason is, but maybe it's a time that it will take more time of a consolidation to go up, or if there is any news or not, I don't know. So that's the reason that even today persistent is 0.30 because पूरा IT sector ही down है. It's near from 1.3 1.5%. But Lloyd का क्या रीजन से नीचे है वो नहीं पता, बट मे बी आई थिंक दैट राइट नाउ इफ वी सी मेटल सेक्टर्स, तो लॉयड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था. बट आवर टाइमिंग वाज गुड दैट द मोमेंट वी थॉट दैट that it will start going up, so वहाँ से उसने रिवर्स किया. So maybe we can say it was a trap. If you see this, that consolidation and up and then going down, it is a clear trap. Or maybe I don't know, it's just a coincidence if we see. So now let's go to the patterns stocks which I am being ready to buy, and the some stocks which I'll keep in watch list in this week. So let's start with Amber. Amber had the problem that situation is very good, but the thing is that there is no support at down. So stop loss कहाँ रखना if things goes against us? So where we have to put our stop loss, it is very difficult situation. So in that thing I am thinking, sorry for this network problem. And yeah, here is Amber. So in this I am thinking that even if we enter here, so where should we keep our stop loss? We can't keep here because I don't think ये भी proper support मिल सकता है यहाँ पे. We can't keep here also because ये भी नहीं लग रहा है. But one thing is that we can go for the 20 moving average or trailing stop loss. But if we see, it's 7%. But and if we see that this can count as a retest इसलिए because यहाँ से एक selling आया है, and the selling reason is that this large selling coming from this point. So
I think that maybe I should wait until it's crossed this high, and it confirms that now there is uh, no any resistance is coming in between, and then it will be that all time high. So I think resistance जो आने आ रहे बीच में दो, which are the main reason of stock going for consolidating, and that's the reason I am not being convinced to buy this stock right now. सेकंड स्टॉक इज कार ट्रेड। कार ट्रेड जो रैली थी, जो ये अचानक से सडन अप हुआ था 6-7% से, एंड देन इट अगेन शूट अप, एंड देन दिस ब्रेकआउट वाज वेरी रॉन्ग, एंड आज भी वापस 4% से ऊपर है। सो आई वेट फॉर द रिटेस्ट, एंड आई थिंक दैट जैसा एम्बर में रिटेस्ट देखा है वैसा यहाँ पे भी रिटेस्ट दिखेगा, बट द फर्क इज दैट यार इट इज अ स्टॉप लॉस, इट इज अ डिफाइंड स्टॉप लॉस वी कैन विच वी कैन कीप योर, जो उसमें नहीं दिख रहा था। एंड द रीजन इज दैट इफ यू सी द मूविंग एवरेज डिफरेंस, इसमें इट्स दे आर ट्राइंग टू गो अप, एंड इफ यू सी इन द एम्बर there is a so many gap between 50 and 20 moving average. So if it cross 20, there are chances that 50 पे रुक सकता है। सो थोड़ा रिस्क रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है रिवॉर्ड्स को देखने जाए तो। एंड इफ यू सी इन द कार ट्रेड, सो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से वी कैन पुश अवर लिमिट टू अ 50 मूविंग एवरेज, एंड वी ऑल्सो डोंट नो डेट यहाँ से स्टॉक अगर न्यू हाई अगर डायरेक्ट बनाएगा और मे बी ये वापस नीचे आएगा। सो दैट्स द टू वे पॉइंट, बिकॉज इफ इट कम्स हियर एट दिस पॉइंट, मानो कि यहाँ पे एक रिटेस्ट आता है और ये कैंडल वापस बनता है यहाँ से, and is this point it will be like 7-8%, yeah, so it's 7-8% is okay, but बात यह है कि यहाँ पे एक स्टॉप अच्छा मिल सकता है। Caffeine is also in very good position, but I'll wait until it breaks 11400. Right now I'm thinking to buy BEML, because the reason is that if we see the selling continuously, तो एक भी सेलिंग ज़्यादा देर तक सेटल नहीं हो पाई है, और एट एवरी 20 मूविंग एवरेज से एक बाइंग प्रेशर आया है। सो आई थिंक it's a good buying side, and if you see, so यहाँ पे भी एक वॉल्यूम का जो ये ड्रॉट आउट है जो हुआ है, विच शोज द सिग्नल दैट सेलर्स इतने एक्टिव नहीं है ये प्लेस पे। So, and this is the again a sign of buying from this point and with a good volume. So I'm thinking to buy BEML. The fourth stock is PGIL. I don't know, I have to reload every time because network problem आ रहा है यहाँ पे अभी। So PGIL is also at a very good point, but in this stock right now, my point of view is that I'll buy 50% of my quantity here, and another 50% when it breaks 1600. And this is the very big candle which gives a resistance. So हो सकता है कि यहाँ से एक थोड़ा कंसोलिडेशन की फॉलोअप दिखने वापस मिल सके। So I am waiting for that point. So right now I'll be like in with PGIL with 50% only, but I'm still thinking out. I'm still not convinced. Sorry for this problem, but I have to do it again and again. So next stock is Manorama, and Manorama is it was been 4.5% up, and it's a good buy. But again ये एक इसके जो high level points है वहाँ से नीचे आया, so I will not buy it. I won't buy it until it breaks out, because at that everything is on breakout only, because that shows the sign that whether we have to buy or not. So it's a clear sign not to buy right now. There are so many stocks to buy, but जो एक प्रॉपर एंट्री मिलनी चाहिए वो एंट्री नहीं मिल रही है, जिसके कारण से दैट जो कॉन्फिडेंस होता है बाय करने में वो थोड़ा लूज आउट होते जा रहा है। सेम इफ वी सी द रीजन इज रेडी को खैतान, सेलिंग यहाँ पे है, यहाँ पे भी अच्छे से एक भी कैंडल्स बने नहीं है, बट वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड आई एम नॉट बाइंग। बट इफ यू हैव द कन्विक्शन यू कैन बाई इट, but I want that very good candle like this. It's nearly 1%, but I want that like that candle of 2-3% to take an entry.
Red, Kotak Bank is the stock which I want to recommend. भले आज उसने breakout नहीं दिया है, but that's the stock of the week. We can watch this stock for upcoming days because finance is going very good, banking sector is going very good, and Kotak is performing very good. If we see the percentage wise, कोटक ने कोटक ने बहुत ही अच्छा quarter results दिए है, and that's the sign of getting from this. It's not from year only 52 week high, it's also all time high, because if we see weekly portfolio 2021, yep, 2021 से जो हाई बनाया था वो अभी वापस हाई क्रॉस करने जा रहा है, सो इट्स ऑल टाइम हाई नियर. एंड इफ यू सी द वीकली कैंडल, सो 20 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, सो देर इज द चांसेस ऑफ ब्रेकआउट एंड गुड रन. ABDA, I saw this stock on Sunday, and जैसे कि आप देख रहे हो मैंने लाइन भी ड्रॉ करके रखी है रेजिस्टेंस की. आई वॉज गोइंग टू बाय एट मॉर्निंग बट आई वेटेड के एक बार देख लूँ 3 बजे क्या होता है, एंड देन समटाइम इट्स द साइड इफेक्ट्स ऑफ वेटिंग फॉर 3 o'clock, एंड ये शूट अप हो गया एंड नाउ इट्स आउट ऑफ द बॉक्स. आस्क ऑटो, आस्क ऑटो जो financially it's a good stock, and it's the resistance is breaking, and if it's break I'm gonna buy this stock. तब तक के लिए मैं वेट करूँगा. Last but not least, this is also the stock of the week which I'm gonna buy, none other than Vishal Mart. And Vishal Mart का reason ये है that financials are too good, volumes are shaking up, and if you see the going down levels which are not not very bad, I think जरा भी sellings नहीं दिख रहे इतने. इफ़ वी सी ये लाइन से जो 8-10 दिन थे जुलाई के, सेलिंग ज़रा भी नहीं है, बस स्टॉक नीचे जा रहा है, which shows the strength in the stock, and we can buy this stock. So I'm gonna buy this stock after this. I put this video on, and nearly 3 3:30 तो बज जाएगा जब तक ये वीडियो होगा. But yeah, I'm gonna buy Vishal Mega Mart. So that's it for today. See you in next video. Bye bye.